Now, as we have discussed about waste materials, so we will discuss about types of waste. Now, waste can be classified in different ways that are based on their properties and disposal way. A common method of classifying waste is based on the property of their decay कि हम किस मेथड से उनको डिस्पोज कर रहे हैं. ठीक है, दे आर ऑन बेस्ड ऑन दिस मेथड्स. Now there are two types of waste that are biodegradable and non-biodegradable. Now what is degradable here? Degradable means जो that can be broken down into pieces. Now bio means जो break down हो जाते हैं. Non-bio means that do not break down. So what are biodegradable waste? Biodegradable waste are those waste which are decomposed by bacteria or micro living organisms into smaller substances. Some of the biodegradable waste are paper waste, fruits and vegetable peels, agricultural waste, and they convert all these things into the manure. Or when they degrade, they will not harm anyone or they will not pollute the environment, but they take some time to decompose, and it is not a fast process, but as fastly as it is decomposed, it is better for us. Now next is non biodegradable waste. Non biodegradable means that cannot be broken down into simpler substances by bacteria. Now some of the non-biodegradable waste are plastic, industrial waste, cold drink cans. Now, as we all know, we should have to dispose the waste material into the dustbin. But there are so many waste material that we have to throw them into the dustbin. Some decompose and some are not decomposed by the microorganisms. Now, most materials that are man-made or prepared in factories are non-biodegradable. एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल? ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं सॉइल में. एज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. इफ एनी एनिमल ईट द प्लास्टिक when it is disposed in the garbage, what will happen? It may die, or it is very hazardous for all the living organisms. As the amount of waste has increased, the way we dispose it has not changed much. हमने अपना waste को change नहीं किया है, but जो हमारी amount है मटेरियल्स को यूज़ करने की वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. वी मोस्टली पाइल वेस्ट एंड बर्न इट. हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल. So, on our daily activities, we give rise to a large amount of waste from different sources. There are the items that we do not want, but many items can be considered as garbage, that are paper waste, fruit vegetable waste, agriculture waste, plastic, industrial waste, cold drink waste. But some of these are biodegradable and some of these are non-biodegradable. That depend on the property and disposal mechanism of the decay. Now, waste can be classified in many different ways as we have discussed earlier. Based on the properties and disposal mechanism available, a common method of classifying waste is based on the property of their decay. Next is the waste. Now we have discussed that there are two types of waste, biodegradable and non-biodegradable. We will discuss one by one. The waste that decays and decompose naturally, जो naturally हो जाते हैं break down simple pieces में, like by microorganisms like earthworm. ठीक है, all sorts of materials derived from living matter can be decomposed. वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट दे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन एंड लीव नो रेसिड्यू. उनमें से कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता, वो सारे कम्प्लीटली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नथिंग विल लेफ्ट ओवर. Kitchen waste like vegetable and fruit peels, tea dust, eggshells and bones, which are the major part of garbage from homes. ये सारी जो मटेरियल्स हैं ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये किचन वेस्ट होते हैं. एंड दीज आर बायोडिग्रेडेबल. दीज कैन बी इजिली ब्रेक डाउन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दीज कैन बी यूज टू मेक मैन्योर. हम इनका किस में यूज़ कर सकते हैं, खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं. सच वेस्ट आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज वेट वेस्ट. ये क्या होते हैं, वेट वेस्ट होते हैं, बिकॉज दे हैव वाटर प्रेजेंट इन दैम.
Now next is non-biodegradable waste. The waste that does not decay or decompose is called non-biodegradable. As the name suggests, non-bio means जो decompose नहीं होते हैं, जो break down नहीं होते हैं. Most materials that are artificial और synthetic, कुछ material क्या होते हैं, artificial होते हैं, कुछ नेचुरली मिलते हैं हमें, दैट इज मैन मेड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम नहीं डिकम्पोज कर सकते, दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं सॉइल में. And some examples of non-biodegradable waste are plastic bag, polythene covers, plastic bottle, plastic spoon, cold drink cans, old broken bottles, medicine bottles. These are the examples of non-biodegradable waste that cannot be degraded. These can be recycled और reused. हम क्या करते हैं, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं और हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिग्रेड देम. हम इनको क्या नहीं कर सकते, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं. मैनी ऑफ दीज वेस्ट आर कैटेगराइज एज ड्राई वेस्ट. इनको क्या बोलते हैं, हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर द वेस्ट दैट कैन नॉट बी decomposed. Biodegradable waste are known as wet waste and non-biodegradable waste are known as dry waste. Non-biodegradable waste are very hazardous, as if any animal have plastic bag or polythene cover, what will happen, it will very dangerous for their health or they may have death also. So we should not dispose them openly.